Just it is just a brief. Don't get uh, confused with these images. The only motive is to show you the complexity of a very simple mechanical engineering system, although it is mechanical engineering system. And can this be a reason, Ritik? Maybe spool got stuck in front of it due to the breakage. Yes, it can be a reason that spool head got stuck in front of it due to the breakage. Now, very good, Ritik, that you asked this question. Let me tell you that what will happen. Class, please look at this question. Ritik has asked, can this be a reason? Maybe spool got stuck in front of it due to breakage. So let us see into the perspectives that what can happen when this is the condition. So Ritik is saying that a spool has been stuck into this position. Okay. Now what will happen? I already told you that there will be a sequence that this spool will push the gear will fall into the chute, and this spool will get back to its position. And after that, this sensor is going to give an information and next process is going to work. Okay. So this sensor is going to give information. It has nothing to do, but the sequence might be like this. So now you can see that if this spool is then in the extended position, this is your extended position. If it is extended, it is going to push the gears and spool will be somewhere here. Okay, and it will this spool will be somewhere here and it will push the gears. Okay, when it is in this particular position, your piston will be in this position and your this proximity sensor will be activated and this proximity sensor will not be activated. Now what will happen? There definitely will be a initial condition that until and unless this sensor is activated, the next process is not going to start. Okay, there will be a sequence. It is very important to for you to understand the criticality of sequence. We have a sequence function chart that how a particular sequence work, and we are going to draw it for each and every station in this course. So don't worry about it. You just need to know that there is a particular sequence by which this process is going to work. There will be initial conditions for each and every step. So for this step, that it should initiate the movement, what will happen? The initial condition is that this spool has been shifted to this position, and after that it has been retracted to its original position, and this sensor is activated. Yes, is there any doubt? रुको ना, Hello? दिखतो ना. Someone has unmuted. Okay. Khushbu, your mic, I think you have unmuted the mic by mistake. Khushbu, your mic is unmuted by mistake. Yeah. So is there any doubt regarding this question? Thank you, Ritik. I think this is clear now. And class, are you aligned to this question? Are you aligned to this solution? Did you understood what? Yes, yes. So it is very important for you to understand that how a process is working it and how a sequence is important, and also the position. Now with this question, I want to thank Ritik that he asked this question, because this question has a particular meaning and it has came from your side only. Therefore I am just giving you another vision to this particular problem. And this problem is that now you can see that the position of every component is also important. So if it is in this position or if it is in this position, it is also very much important. So these positions are identified as, a more specific word for this is, I will note it down in the chat box.
So these positions are normally, or you can say technically called as displacement steps. Displacement steps. Okay, so these positions are called as displacement steps, and the diagram of all the components is called as DSD, displacement step diagram. So these are your DSDs, and the entire sequence is called SFC, which is your sequential function chart. Okay, so now you understood that the importance of there is an importance of the displacement steps. So you need to interpret in your manuals. You are definitely going to see the DSDs, and you are going to see the SFCs, which are your sequential function chart. So once you know the process, once you extract the sequential function chart, once you extract the displacement step diagram, once you get the electrical wiring, and once you are going to get the actuation circuit. For example, if it is a hydraulic circuit, then it might be linked. So these 4 to 3 diagrams are going to be there in your manual for any system. Okay, so this is important. So this is the relevance. I think it is very clear for you that why we go into displacement steps and sequential function charts. Okay, so for every process there will be displacement step diagrams, and there will be sequential function charts also. Okay, got it? Is there any doubt? Is there any doubt till now, class? Yeah. Okay, okay, okay. So just to tell you that how a mechanical core mechanical system can also be a part of system, I have included these slides, and we are not going much deep into these particular slides, but this is important, how you have associated a particular. Excuse me, just give me a minute. Sorry. Yeah. So now let us continue. Let us continue with the yeah, we were going to learn about the engine management system. Now you can see this is a very theoretical approach for looking into the four-stroke engine. You know that just for since you are from electronics background, you just need to know what the process is. Okay, you don't need to go into the very deep knowledge and about that how this function work, about the process only. There is a intake stroke. This piston will move downwards. Okay, the fuel will get into the piston. Okay, now what will happen once this stroke is completed, there will be a compression stroke. So these two walls will be, this particular wall will be open. Let me use a laser pointer. Yeah, so now you can see here this particular wall will be open in the intake stroke. Okay, the air fuel mixture is going to rush into the cylinder. Okay, and once this piston is to the bottom dead center, which is your lowest point, okay, the
there will be a combination of air fuel mixture in this particular chamber. Now both these valves are going to get closed. Okay, it is important for you to just understand and have a look at this process, because we are just going to have a detail about how much detail it can be, what a process we think and how much detail it can be. Although it is from mechanical aspect, but you need not to cram it or you need not to memorize it. Just look at this aspect, that how much deep we can go for a control strategy of a better understanding of a particular process. That's it. Okay, so this is your air fuel mixture. Your both walls are closed. Now it is getting compressed. Okay, once this piston moves to the topmost position, there will be a spark and this fuel will get burned. Okay, so there will be a combustion in this particular fuel, and this fuel is going to give you a power stroke. Okay, this power stroke is going to push your piston in downward direction. Okay, and after that, once it is to the bottom dead center, then there will be an exhaust port. Okay, so this valve is going to get opened, and your uh, flue gases are going to get exhausted through this vent. Okay, so this is a four stroke method. Now you can see that there are just parameters. Okay, there are just parameters that define, these are your parameters that can define the outcomes. Okay, just have a look into that only, because you are an electronic engineer, you need not to go into the parameters, but it is your job to specify or to function the particular parameters and get an output through that. That will be your job. Whether I have taken a core mechanical example here just to show you that whether it is related to mechanical or something else, you will definitely be related to it. Okay, so what type of parameters are you looking? You are looking at spark timing, you are looking at air fuel mixture solenoid, you are looking at fuel injection valve. Okay, these are the things. Fuel injection valve will monitor your fuel injection. Okay, your air fuel mixture solenoid, what it is going to do, it will be providing you a mixture of air and fuel, that what will be the proper stoichiometric mixture which is required for combustion, and one is spark timing. And then your output can be engine speed sensor, crank position sensor, spark timing, engine temperature, throttle position, and mass airflow sensor. Okay, okay, have you, I think you have understood this particular process now. Okay, so as this is our usual practice for all these sessions, that we have a questionnaire after the representation. Now suppose you are a you are the engineer, you are a system engineer, and you want to parameterize that I need sensors for this particular system. Okay, so what kind of sensor? I need answers from all of you, and it will be highly appreciated if the answers don't match to each other. Okay, whether you answer twice or thrice, the amount of sensors you are trying to attach to this particular system. Okay, I need answers that you need to procure sensors for all these for this particular function. What kind of sensors those will be? I need answer from all of you that what kind of sensors those will be. Let me show you the PPT so that you can just, it has few answers, but class, I need answers.
So you need to okay. Proximity, flame sensor. Nayan answered temperature sensor. Yes, good. Others, please. Timing sensor, Hitinder, very good. Pressure sensor, Ritik, very good. Engine control sensor, position sensor, temperature sensor. Temperature sensor, proximity sensor. Yes. Pressure sensor. Answer this question on the chat box, or I will individually ask from each and everyone. That I am definitely going to ask this question from everyone then. Proximity, pressure, temperature, engine speed sensor. Okay. Okay. Position sensor. Feedback sensor. Every sensor might be a feedback only. Air pressure sensor. Okay. Thank you, class, for your response. Now, I'll just go one by one. Okay. So, these piston will be at a particular positions, but for a particular process, for a single cycle, it is going down, then up, then down, then up, then one cycle is completed. Okay. There are 4 strokes. Okay. So for a single cycle, say the topmost excuse me, position is top dead center, which is called TDC. I'm writing it in chat box. It is TDC, which is your top dead TDP, or you can say top dead center. TDC center, CNTR. Okay, top dead center. So the topmost position of a piston is called top dead center. So for a single cycle, how many times does this piston is going to be at the top dead center? Can you tell me that? 2 times. Okay, only 2 times. Okay, okay, okay. And there will be this one will be the power stroke. Okay, this one will be the power stroke, and there will be spark here. Okay, so where will you place the sensor for the position? Now you know that for a single cycle it is going to pass 2 times. Okay, so it will be giving for a particular position, for each and every position it is going to pass 2 times. So what kind of technology you are going to add with your sensor for that? So if you have a sensor, what kind of technology you are going to add? Yes, kind of counter. Very good, Ritik. Are everyone aligned with this answer? Kind of counter. Very good. I'm very happy that Ritik, you have answered so much quickly about this question. Will that be counter only? Class, I need answer from everyone.
Answer yes or no, class. Yeah, Kalpana said no idea, and Ankush said yes. Aprajita said yes. Rest are not answering today. Yeah, yeah. Thank you. So now you can see that a sensor will give this position twice. Okay, Adarsh. Uh, no issue. You can ask the details because I'm working at a very slow pace. I think every student is capable of teaching this particular sessions individually. So you might have many friends in this particular group. All are your friends in this group. So you just can ask these questions from, or you can just ask them to tell you all these concepts and details. Okay, no issues, Adarsh. And I think all are getting the main scope of the knowledge that they want to attain from this session. So there is no issue. Okay, one or two attendance, there is no issue. Okay, if you have something urgent, there's no issue. If you want to get back to me for understanding that what was taught in the session, you can always get back to me. And there's no issue in that also. Okay, Adarsh. Okay, so now you can see, Kalpana, you had a doubt. You had said that you don't have any idea. Just to tell you that what is a function of counter? A counter only counts the number of operation. This example is just for you to show that why counters are required. You can see that for a particular sensor, for a single cycle, it is going to count it twice. Okay, so for in order to get a particular logic from which you are going to control it, what you require is a counter which counts that how many time it is getting activated. So for a single cycle, you can see the sensor at this particular position is going to sense it. Okay, is going to sense this particular position. Okay, sense this particular position, and it is going to sense it twice. So if you are integrating a sensor with a counter, then you know that how many times it has done for a single cycle, and when you know that how many times it has reached to the top dead sensor, so from that you can have very useful informations also, that what was that RPM, because the time difference can also be, you can integrate timer with that, you can calculate time and number of counts. Through that you can calculate the RPM. Okay, you can calculate the number of fluctuations. You can have each every kind of information through that sensor. Okay, but the issue is I can't place a sensor at this particular position. Why? What might be the reason? At top dead center, I can't uh, place the sensor. What can be the reason behind that? And I need answer from everyone. Okay, I need answer from uh, Abhay. I need answer from Abhay. Adarsh has network issue. So Alok, Aprajita, Bhanu, Hitender, Hitesh, Kalpana, Khushbu, Muskan, Nayan. I need answer from everyone in the chat box. Okay. What is the constraint that we are not able to install a sensor at top dead center? Can you tell me the answer? Class, please respond to that question.
ये मैकेनिकल का पार्ट है बेटा, लेकिन ये मत समझना कि हमारा पार्ट नहीं है। ये इंस्टॉलेशन जो सेंसर का पार्ट होता है ना, ईसी वालों के हाथ में जाता है हमेशा। शॉप फ्लोर पे हो चाहे आप कभी भी हो, सेंसर आप ही देख रहे होगे। तो अगर आपने पोजीशन का नहीं पता किया या जवाब नहीं दिया इसका कि ये हमारा पार्ट है ही नहीं, तो मैं बता दूं कि ये आप ही का पार्ट है। आप ही आंसरेबल होगे यहाँ तो। चलो ठीक है, तो जब शॉप फ्लोर पे जाओगे तो आप ही को दिक्कत होगी। या सो स्पार्किंग, yes, sparking might be due to generation of spark and high pressure. Spark at high pressure spark. Okay, ठीक है। स्पार्क और हाई प्रेशर की प्रोसेस तो बेटा की दिक्कत तो बेटा अंदर है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे एक रीड टाइप का स्विच लगा दूंगा। यहाँ पे एक फेरस रिंग होती है टॉप डेड सेंटर पे, है ना, वो फेरस रिंग को वो कर सकता है। तो स्पार्किंग और प्रेशर की प्रॉब्लम तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन मैं बाहर भी नहीं लगा सकता इसके सेंसर। अंदर तो नहीं लगा पाऊंगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पर बाहर भी नहीं लगा पाऊंगा। इसके बाहर मैं इसको इंस्टॉल कर सकता था ना, एक सेंसर को एक लगा करके, एक रीड स्विच को लगा देता मैं, मैग्नेटिक रीड स्विच को। Yes, yes, this answer is very correct. Due to high temperature fluctuation, maybe due to sudden rise in temperature. Yes, temperature, vibration due to mechanical movement. Okay, vibration due to mechanical movement. Okay, yes, very correct, very correct. Sachin, very good. Ritik, very good. Adarsh, very good. Rest also can see that these might be the reasons. तो फिर मैं सेंसर को कहाँ लगाऊं जहां से मुझे पोजीशन पता चल जाए कि हाँ इसकी पोजीशन कहाँ है। मैं कहाँ लगाऊंगा उसको? मैं इस पूरे सिलेंडर पे नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर जैकेट भी लगानी पड़ती है ताकि इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि उसको हमको टेम्परेचर को फ्लो करना पड़ता है। यहाँ पे एक वाटर की जैकेट लगाते हैं, इसलिए हम सेंसर नहीं लगा पाते यहाँ पे। तो हम इसकी पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करें? क्यों? क्योंकि पोजीशन भी क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमें पता है जब ये टॉप डेड सेंटर यहाँ से इस पोजीशन पे जा रहा होगा। अब देखिए सीक्वेंस भी काम कर रहा है ना यहाँ पे। हमने अभी देखा कि किसी भी प्रोसेस में केवल यस और नो से आंसर नहीं चला। सॉरी, एक्सक्यूज। एक सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सीक्वेंस भी फॉलो करना बहुत ज्यादा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका इनिशियल जो कंस्ट्रेंट है कि वो यस और नो पे जा रहा है, उसके साथ एक सीक्वेंस भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी देखो आप कि ये, अगर आप इसको देखेंगे इनटेक स्ट्रोक को, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी ये ऊपर से नीचे जा रहा है। काम तो वही कर रहा है, इट इज डूइंग द सेम जॉब, बट in this particular stroke your this piston is open, so from where your air and fuel mixture is coming. Okay, and in this particular situation your both the ports are closed and you are getting a power stroke. Understood? So we need these positions, we need a control system that maps these position. Where will we install the center sensor, where we can see that at the bottom I am saying that it is not going to be installed on the cylinder, it is not going to be installed on the cylinder. What might be the position? I need answer from everyone for this question. I need a bit involvement in this particular session, क्योंकि ये मैकेनिकल है, आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दोगे मुझे पता है, लेकिन आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे सेंसर लगाने का काम आप ही का है।
Okay, it is very important for you to understand that how you are going to install a sensor and how to start with a control analogy. Okay, मैं वन बाय वन ही क्वेश्चन पुट करता हूँ, वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो इसीलिए। अब है, आप बताइए, गलत बता रहे हो सही बता रहे हो कोई इशू नहीं है, बस बताओ, आप फट्टे भी मारने फट्टे मारो, नो इशू। Sahil Gupta, bottom of the shaft. Yes, yes, yes. Sahil, you are correct. Abhay, answer please. Abhay, Abhay Kumar. Okay. Bottom, bottom, bottom. Adarsh, shaft. Yeah. So this is your crankshaft, and you can put your sensor to this position because this crankshaft is rotating and it is rotating in number. So you can add a sensor with a counter, with a timer, and you can just get the information about the position. Okay, okay. So this practice is just to show you that to what extent you need solutions for a particular question, and a very relevant question. Okay, so although it is a core mechanical concept of cylinder and engine, but you can see that how you will be related to these questions. Okay, it is not going to be like that. If there would have been a mechanical engineer in this particular session, I had to teach him NPN sensor and PNP sensor, and you need to be taught about the mechanical systems a little bit so that you can understand, and so that every engineering student from each and every branch can understand that how a system is related to each other. Okay, so now you can see this was the question about these positions. Now let us look into the more details of your engine management system. Okay, now you can see that these sensors are installed at the knock point and the crankshaft speed sensor. So now you can see that this position sensor, which is your crankshaft speed sensor, is not installed on the cylinder. They have shown it downside, and it is showing that how the crankshaft speed is there. Okay, now just look into this, that you have just seen that how air fuel is getting mixed, how your air is coming, how your air is controlled, how your fuel timing is controlled, how your valve timing is controlled. Okay, how your spark is controlled. These all things are controlled, and you can get input from the knock sensor, crankshaft sensor. You have a control module, knock detection. Knocking is just an phenomena in IC engine, which is internal combustion engine, that occurs due to mistiming of valve or pre-ignition, or some characteristics related to mechanical concepts. You need not to go in deep into that, but you need to see that what you can control out of it. Okay, what is your role in this particular mechanical issue? Okay, your role is that you need to get the sensors. Okay, so knock means, what does knocking means? Can someone tell me? I think you had this subject in first year. You might be having a very little idea about knocking. Knocking. I need answer from everyone. Class थोड़ा सा attentive रहिए. Please answer. Knocking नहीं आइडिया ना? ठीक है. किसी को आइडिया है? मुझे सारे बच्चों से चाहिए आंसर, yes या no. आइडिया नहीं है ना नॉकिंग का? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. नॉकिंग आपको नहीं पता होगा, कोई इशू नहीं है. नॉकिंग एक मैकेनिकल फिनोमेना होता है जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन का फिनोमेना है.
कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि जब आप इंजन स्टार्ट करते हो इनिशियल कंडीशन में, एक ना एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ गए। ठीक है ना, वो वाइब्रेशन क्यों आते हैं? क्योंकि जो कंबशन हुआ है इंजन का, उसमें हो सकता है कि एक फ्लेम मूव कर रही हो, दूसरी फ्लेम से टकरा गई हो, उसकी वजह से शॉक वेव आ गई। अगर आप इतना डीप भी नहीं जाना चाहते, तब आप केवल एक चीज नोट कर लीजिए कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो, ठीक है ना, वाइब्रेशन, अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव। शॉक वेव की वजह से अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो उस फिनोमेना को नॉकिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, नॉकिंग को डिटेक्ट करने के लिए किस टाइप का सेंसर चाहिए होगा? क्या डिटेक्ट करने के लिए सेंसर चाहिए होगा? इसका आंसर आप दे सकते हो। ये आंसर मुझे सबसे चाहिए। नॉकिंग, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। वो सेंसर कौन सा लगाओगे आप नॉकिंग के लिए? वो तो आपका काम है कि आपको सेंसर लगाना है। नॉकिंग शॉक वेव की वजह से ज्यादा, नॉक सेंसर होगा कौन सा सेंसर, क्या सेंस करेगा वो? नॉकिंग फिनोमेना वाइब्रेशन का फिनोमेना है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होंगे इंजन के अंदर, सिलेंडर से जो आ रहे होंगे, तो आप क्या सेंस करोगे जिससे कहोगे कि हाँ नॉकिंग हो रही है? या बाकी बच्चे कहाँ हैं? कल्पना ने आंसर दिया है, अपराजिता ने वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सेंसर होगा ना। बट ऑफ कोर्स ही बात है, वाइब्रेशन सेंसर होगा। क्यों? क्योंकि नॉकिंग टेम्परेचर तो राइज कर ही रहा है, फ्लेम तो बने ही है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है नॉकिंग फिनोमेना की वजह से। और वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा हमको। नॉकिंग कम करने के लिए हमको या तो पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है तो वो कम करनी पड़ेगी, फ्यूल ज्यादा जा रहा है तो वो कम करना पड़ेगा। मैकेनिकल एस्पेक्ट से देखो तो आपकी ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पेक्ट से देखो, फैक्ट्री ऑटोमेशन के एस्पेक्ट से देखो, या मेकाट्रॉनिक्स या ऑटोमेशन के एस्पेक्ट से देखो, तो आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो कि हाँ वाइब्रेशन का सेंसर तो चाहिए होगा जो कि सेंस करेगा। ठीक है ना। तो कंट्रोलर के पास क्या चीज जाएगी कि वाइब्रेशन एक सेट लिमिट से ज्यादा आ रहे हैं, आपको ये काम करना है। वो लॉजिक भी आप ही डालोगे, हालांकि आपको एक बंदा बताएगा जो कि आपको ये लॉजिक डालना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी कि वाइब्रेशन सेंसर लगेगा कहाँ, ठीक है ना, और कौन सा सेंसर आप लगाओगे, ठीक है ना, वो तो आप ही का के आर ए होगा। के आर ए तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है? किसी इंडस्ट्री में गया, आपका के आर ए क्या होता है? ओके, ओके, ओके। देखो, आप इंडस्ट्रीज में जाते हो ना, तो आपके ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है ना। दोज आर योर की। Okay, so this is key responsibility area. Okay, की रिजल्ट एरिया और की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ठीक है ना। तो आपके के तो डिफाइंड होंगे ना, और उस के में आपको ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी ना। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, आप प्रोसेस इंजीनियर हो, इवन इफ आप डिजाइन इंजीनियर हो, तो आप इनिशियल लेवल पे तो यही करोगे ना। इनिशियल लेवल पे तो आप किसी भी एक सिंगल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डीप जाओगे। बट बेटा इस चीज को समझिए, आप जैसे जैसे आप अपर मैनेजमेंट लेवल पे जाओगे, तो आपको तो प्रोसेस को इंटीग्रेट ही करना होगा ना। प्रोसेस को इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? आपको यही प्रोसेस मिलेंगे और इन्हीं को आप इंटीग्रेट करोगे। तो उस वक्त भी, और अगर आप प्रोसेस इंजीनियर हो या फिर
मेंटेनेंस इंजीनियर हो या फिर इवन डिजाइन इंजीनियर भी हो, तो ये सारे आपके केआरए में क्या आएगा कि आपको पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी, सेंसर बताना पड़ेगा। ओके, उसकी कंडीशनिंग आप करोगे, उसका लॉजिक आप करोगे, और रिक्वायरमेंट भी तो आप ही रेस करोगे। एम आई करेक्ट और नॉट? सो ये आपके केआरए में ऐड होता ही होता है, ठीक है ना। अभी आप अगर आप देखो ना अपने naukri.com और इन पे, तो केआरए आप देखना 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद क्या क्या मांगते हैं, तो उसमें आप देखना आपको ये प्रोसेस की नॉलेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, आर यू गेटिंग इट? आंसर यस, आंसर मी यस और नो। ओके, सो कई बार आपके मैनेजर्स कहेंगे भी, मैं आपको 3 टेक्निकल टर्म बताऊंगा जिससे आपके मैनेजर आपको हो सकता है परेशान भी करें। आपसे बोले आपका तो ये केआरए था, आप वहां पे ऐसे मत बैठना। अब आपको पता है कि केआरए क्या होता है। 2-3 और टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो उस पे मैं आपको एक अलग से मंडे, हम लोग मंडे को करेंगे ना सेशन, मंडे को बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो तीनों आपको बताऊंगा कि होता है क्या है। बस एक छोटा सा ग्लिम्स बता दूंगा, ताकि सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना कहीं से भी, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप कहो कि हाँ मुझे पता है ये चीज। ओके, जस्ट टू गेट यू अलाइंड कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। सो मेन मोटिव वॉज for you to understand. So now you know कि knock sensor होगा क्या? It will be ultimately a vibration sensor which will be just sensing these vibrations. Okay. So knock sensor will go into knock detection. We will have knock control module. अब देखिए वो या तो टर्बो चार्जर को वो देगा, या तो वो ये कहेगा कि एयर को ज्यादा इन्फ्यूज करो। ठीक है, नॉकिंग हुई मतलब वाइब्रेशन ज्यादा हुए, वाइब्रेशन ज्यादा हुए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो कंबशन बहुत ज्यादा एब्रप्टली हो रहा है। तो टर्बो चार्जर से क्या होगा, एक एयर का रश चला जाएगा जिससे कि वो जो एब्रप्ट कंबशन है वो रुक जाएगा और आपको थोड़ी पावर कम मिलेगी। ठीक है ना, मैं केवल एक ही प्रोसेस बता रहा हूँ, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मत देखिए, केवल एक नॉक को ही देख लीजिए कि नॉक से कैसे जा रहे हैं, बाकी सारे तो पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, और यही होता है कि पूरे सिस्टम को नहीं आपको एनालाइज करना है अभी के लिए। एक चीज जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां से आपको सोल्यूशन निकाल करके पता चल जाएगा कि क्या करना है। और अगर वो चीज आपको पता चल गई, माय जॉब इज डन, क्योंकि आपका एक एस्पेक्ट ओपन हो गया है। आपको पता है कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, दिखेगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर मैं एक फोकस से एक पॉइंट पे ही उसको फोकस करके सोल्यूशन बेस पे जाऊंगा, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ उसको। ठीक है ना। तो अब देखिए, नॉक सेंसर आपने इंस्टॉल किया, नॉक से आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको पता चला कि हाँ नॉकिंग हो रही है, मतलब एब्रप्ट जो शॉक वेव है वो ज्यादा बन रही है। वो शॉक वेव मैकेनिकली अगर आप देखो, तो हाउ कैन यू रिड्यूस दैट शॉक वेव? बाय द इन्फ्यूजन ऑफ एयर। सो हम टर्बो चार्जर लगा देंगे, और टर्बो चार्जर से एयर का इन्फ्यूजन ज्यादा बढ़ा देंगे। या फिर और क्या हो सकता है इसका एक कारण, देयर माइट बी अ रीजन फॉर दैट आल्सो, दैट इग्निशन टाइमिंग कंट्रोल मॉड्यूल, दैट इग्निशन टाइमिंग हैज टू बी इम्प्रूव। हो सकता है कि इग्निशन की टाइमिंग, इग्निशन का जो आपका स्पार्क है वो स्पार्क बहुत जल्दी या बहुत लेट जा रहा है, और कितना जल्दी या कितना लेट जा रहा है वो नॉक से ही पता चलेगा कि कितना नॉक आ रहा है। ओके, सो यू कैन कंट्रोल विद दैट आल्सो। ओके, देन स्टार्ट की आइडल स्पीड मीन्स स्टार्टिंग स्पीड, कि आप स्टार्टिंग स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। एंड देन throttle, throttle is this throttling. Okay, so turbocharger is also added and throttling can be used for infusion of air. Okay, तो एक ही सिंगल प्रॉब्लम के आप देख रहे हो कितने सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर नॉकिंग। अगर नॉकिंग हो रही है तो मुझे किन किन चीजों से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस में आपको प्रोसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और ये प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे नॉक सेंसर को लेकर के डिटेक्ट कर सकते हो, तो आप किसी भी प्रोसेस को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये ड्राइव कंट्रोल, नाउ डेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर कमिंग इनटू पिक्चर।
आप इस पूरे टेक्नोलॉजी को हटा दोगे, लेकिन कोई ना कोई वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ बैटरीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होइए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और हो सकता है कि आप लोग उसके टच में आना पड़े। व्हाट काइंड ऑफ बैटरी इज रिक्वायर्ड? मोर आंसर्स? lithium ion. Yes, 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 lithium ion. Lithium ion battery is required. Very correct, very correct. Li ion batteries और एक अलग ही इंटरेस्टिंग रिसर्च डेवलप हो जाती है लिथियम आयन से ही। आपको पता है, मैं मतलब आउट ऑफ स्कोप एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लिथियम आयन के अगर मटेरियल की बात करें, लिथियम के जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब एक इंटरनेशनल न्यूज़ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि आप कॉमन टेक्नोलॉजीज के साथ जो न्यूज़ आती हैं उनसे भी रिलेट होना चाहिए आपको। तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ लिथियम आयन के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहाँ नहीं है? नहीं पता है? तो ये आप अपने इंटरेस्ट से एक बार देखिएगा, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि लिथियम के रिसोर्सेज कहाँ है और इसकी न्यूज़ क्यों है। एंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू चाइना वर्सेस इंडिया। ओके? नहीं, चाइना में है नहीं रिसोर्सेज, चाइना ने जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है उनको जैसे वो करता है हमेशा ओवरटेक कर लेता है उन जगहों को, गरीब ही होते हैं। यस अंकुश, वेरी गुड। और फिर हमको एकदम से हम जागते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सब है, फिर बाकी लोग उसके पीछे पड़ते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट जिस लेवल से बढ़ता जाएगा उतना जाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर आप, मोस्ट ऑफ यू, आप जैसे जो ट्रेंड होता है जिसमें टेक्निकलिटी में आप ये चीज़ बताओगे कि हाँ मुझे प्रोसेस का सब पता है, ये पता है, थोड़े से कॉमन क्वेश्चन भी आपसे पुट अप हो सकते हैं। ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत डीप, बहुत टाइम डिवोशन, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए इस चीज को कि हाँ एक इंटरेस्ट है, यू आर एन इंजीनियर, मैं उससे कनेक्ट करा पाऊँ। ठीक है ना? बोलीविया, ठीक है ना, ये सारे कहाँ पे हैं? कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं ये सारे? साउथ अमेरिका। हम्म। हम्म। गुड, गुड, गुड। आप लोग अभी से थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गए और थोड़ा बहुत गूगल भी कर ही रहोगे आप लोग, तो बहुत, मतलब ये है कि राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक पाथ आपको मिलना चाहिए। ठीक है? तो मेन मोटिव यही है कि आप, आपका जो फोकस होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, आप उसी डायरेक्शन में मूव हो। ठीक है ना? तो जो थोड़ी थोड़ी चीजें रिक्वायर्ड है मैं वो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, जो डिटेल में रिक्वायर्ड है मैं वो डिटेल में बताऊंगा। ओके? वी विल गो लाइक दैट ओनली विद माय एक्सपीरियंस। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस में, मतलब जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा ही रहा है कि आपको बुकिश एकदम एक चीज बताते रहो, यू विल लूज इंटरेस्ट। लेकिन थोड़ा सा आपको लिंक करो और एक थोड़ा यूनिक टाइप से आपको पढ़ाओ तो आपको समझ में भी आता है। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी सीख ही रहो। ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। मुझे आपसे गेन करना है, आपको मुझसे गेन करना है। ठीक है ना? सो वी वर हेयर
So we were just looking that how much deep we can go for a single नॉक सेंसर ओनली. तो नॉक से मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल का ये बता दिया कि नॉक को डिटेक्ट करेगा. नॉक डिटेक्ट करने के बाद वो क्या क्या कर सकता है. वो लूप में जा सकता है, कंट्रोल लूप्स में किस किस के. या तो एयर को बढ़ा देगा ताकि नॉकिंग कम हो, इग्निशन की टाइमिंग को अल्टर करेगा ताकि नॉकिंग में हम इम्प्रूव कर सके. आइडल स्पीड का मतलब होता है जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो ज्यादा पावर चाहिए होती है. हो सकता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर दे दी, इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो नॉकिंग हो गई. थ्रॉटल कंट्रोल, जो ये थ्रॉटल कर रहे हैं हम एयर का, उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नॉकिंग को. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कंटिन्यू. ओके. तो मैंने इसको जानबूझ करके रखा है अपने मॉड्यूल में. हालांकि ये मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि आप एक सिंगल सिस्टम से कितनी डिटेल्स ले सकते हो अगर आपको पूरे प्रोसेस का पता है. और आप, हो सकता है कि आपको इंजन के बारे में कभी भी कुछ भी ना आए, और हो सकता है कि एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से कुछ भी आ जाए, कोई भी टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाए, हाइड्रोलिक आ जाए, न्यूमेटिक आ जाए, कंबशन की आ गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ आ जाए, डिजाइन के साथ आ जाए, किसी प्रोजेक्ट के साथ आ जाए, लेकिन हर जगह एक प्रोसेस होगा और हर जगह प्रोसेस को समझने के टूल होंगे. ठीक है ना. और हर एक सिंगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी होगी. अगर आप उस मेथोडोलॉजी को समझ गए, उस प्रोसेस को समझने का तरीका समझ गए, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे किसी भी टाइप की इंडस्ट्री के लिए. ये तो हमने मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देख ही लिया, हम उसको रिपीट नहीं करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस कि what how it was important, how why the learning of factory automation and why the learning of entire process was important, and how you can get these energy associations कि एक सिंगल एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, मास कैसे फ्लो कर रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे कर रहा है. और आप लोगों को ये समझना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट a very simple process is also very complicated, and a very complicated process is also very simple. Okay. There are both things, that if a process is complicated you can make it simple, and if a process is looking simple you can get it complicated. So was the motive of this particular session or module completed? Is the module completed? Now you understand it, how you can go through a particular process. Kindly answer to the chat box. Are you aligned to it? Is the goal for this particular module is completed? Okay. So I have completed this module. I'm Thank you very much for keeping the patience, because patience was very much required in order to understand. And I strongly believe that before this week and after this week you might have seen a change in your vision about how to look into a system. Okay. Now we are going to introduce us with type of sensors. Okay. So we have taken a very little bit of sensors, but what I am going to do, I am today going to give you a very brief about the type of sensors in industrial vision or in industrial aspect, that how industry views the sensor, how they try to integrate it. Okay. So just to give you a brief about the difference, that how I am going to proceed and how. So I am starting with videos. Ideally for a general purpose, I have already made the slides, and these slides are these. Okay. Just have a very brief look at these. What I would have done, I would have given a definition of sensor, stimulus of sensor, choosing a sensor, that how a sensor works, how potentiometer sensor works, how what is the analogy of this working, capacitive working, differential transformer, eddy current sensor, inductive sensor,
pneumatic sensor, encoder, proximity switch, reed switch, Hall effect sensor, tacho generators, pyroelectric, which means heat generated sensors. Okay, piezoelectric. Yes, someone was talking about piezoelectric also. That is about creating electric charge from pressure or vibration, or creating vibration from electric charge. Okay, then tactile sensors, photoelectric, and ultrasonic sensor. I'm going very much fast because just to show you that I would have gone through this process, that I would have started reading these PPTs and telling you what the internal structure is. But I'm not going to move forward like this. What I'm going to do is something like this. I'm going to show you the videos that are related to sensors. I would have completed the sensors. I would have taken a lot of time in sensors into that. But with this video, and these videos have been chosen by me, I have been very focused that the path of learning should be very synchronous. You will be learning it step by step for each video. I will be giving you a word drive. Yeah, we are going to cover this. Adarsh, we are going to cover this. So no issue. When the time will come, I am going to cover this. That why current driven devices are used, why not voltage driven? We are going to cover it, and we are going to give you a very good answer or a very specific answer when it is related to the subject. Okay? Okay? I will answer this question. I have this question in my mind and I'm going to take it. Thank you for asking that when I'm going to give you the answer for this particular question. And it might be possible that I can ask this question from your side also. So please be attentive. It will be in the sensors only. It will be within this span of 2 to 3 days only. But this question will be covered. Okay. Let us first start with type of sensors. Okay. Just have a brief look at this particular video, and then we will have a questionnaire. Eyes and ears of a control system. In general, if you want to control it, you must sense it. Because the controls engineer is often called on to specify sensors and deal with sensing problems, sooner or later, we will all get more than enough familiarity with them. In this video, we are going to familiarize you with the sorts of sensors that we frequently use in industrial equipment. We intend this to be an introductory video for a new engineer just getting started, or for anyone looking for a general understanding of some general controls concepts. If you enjoy these videos, be sure to click like and subscribe so you never miss a new one. As a controls engineer, we often tend to see things from the electrical end of things. So in this exploration, we will look at two broad categories of sensors: digital sensors that return on-off signals, and analog sensors that return a range of values. Our first stop is digital sensors. These are by far the most commonly used sensors in the industrial world. So, what is a digital or binary sensor? In theoretical terms, we're referring to something that returns one or more bits of information per sensor. Initially, they were simple: a contact that touched another contact when something got where it was supposed to stop. In those old machines, this often meant 110 volts exposed for the operator to touch, or passing through the machine frame. Unsafe under any condition, and probably illegal in today's safety-conscious world. Later, these became a switch that flipped when something got to a position. These are referred to as limit switches, and are still in use.
We use these sorts of sensors for anything that we divide into two states: on and off, true and false, is and isn't. For example, in position, full, empty, power on, and running. Let's look at a few examples of these kinds of sensors. First, as mentioned before, mechanical switches of various kinds are still around. Limit switches are still used in ugly, dirty environments thanks to their armor-plated construction. One big reason they've become less popular over the years is that they're huge compared to many of the other sensors available. Proximity sensors, very often called proxies, are used for detecting close metal objects using magnetic fields. In many environments, these have replaced limit switches in position sensing applications. Optical sensors have a much longer range than proximity sensors, but they are susceptible to dirt and other environmental and mechanical issues because they use light for sensing. We often use them where we are not picky about exactly where the target is, but we need to know it is there, like boxes on a conveyor, where we don't care where on the conveyor it is, just that it's passing by. Capacitive proximity sensors are like a proximity sensor, but for detecting non-conductive materials. They are very sensitive to contamination and historically have not been very dependable. Ultrasonic proximity detectors detect solid objects using high-frequency sound, but are very susceptible to environmental conditions and dirt. We don't use them often, but they can solve sensing problems nothing else can. An auxiliary contact is a part of a relay. These tell us when whatever is controlling the relay has turned it on or off. A push button senses the operator's action. For now, that's all we'll say about digital sensors. Most controls are still designed around on-off signals, so these are the bread and butter of a control engineer's life. At one time, cars had no fuel gauge, and you had to have a reserve tank, a gas can, so that when you ran out, you could get to a fuel station. Now, cars all have fuel gauges, and we will next look at the sensors that make that possible, along with many other measurements that automation requires. An analog sensor is one that converts a variable physical quantity into a signal that the control system can understand, a voltage or current. By physical quantity, we mean temperature, pressure, humidity, distance, and speed, among others. There is a general category of sensor for each of these. Some sensors combine quantities, like temperature and humidity, or distance and speed, into a single instrument generating two signals. There are a few general categories of signals generated by these devices. For temperature sensing, the devices themselves produce either millivolt range signals in the case of thermocouples, or variable resistances in the case of resistance temperature detectors, or RTDs. Because of their higher accuracy and repeatability, RTDs are generally a better sensing element when we can use them. PLCs have cards that are specifically designed to handle both of these kinds of devices. The rest of the signal categories are converted locally into a more generally understood form of signal, either voltage or current, before being connected to the control system. If the temperature signals have to travel very far to the control system, we usually convert them like this also. The most commonly used standard today is the 4 to 20 milliamp signal because of noise immunity and other characteristics. And every type of analog sensor I have mentioned can generally be purchased in that type of output. We have just taken a whirlwind tour of the primary sensors used in almost every industrial control system. With these sensors, we sense everything from which buttons the operator pushes
to the height of liquid in a tank to the pressure and temperature of steam in a boiler. These sensors and a few others, with their signals processed by hardware and software, control the industrial processes of the world. Make sure that you head over to realparts.com to find even more training material for all of your PLC programming needs. So have you seen the video that in industrial perspective, what is sensor, why? So I have few questions for regarding this video. First of all, tell me that are capacitive sensors more reliable than inductive sensors? Yes or no? Whether the answer is correct or not, kindly answer the question. Which one is more reliable, capacitive or inductive sensor? Am I audible or not? I am audible. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. All the students are aligned except for Sachin. Sachin, can you tell me the reason for your answer? Uh, there might be a reason that you are saying that no capacitive is more reliable than inductive. Rather, in the video, they were saying it very clearly that capacitive sensors are not. Historically, they said that capacitive sensors are not so much reliable, or they are not able to work in harsh conditions. Sachin, answer please. Don't worry whether the answer is correct or wrong, because if you are thinking in some another way, it might be a possibility that I am not thinking in that particular way or others are not thinking. It might be right, it might be wrong. Just answer it. Why are you saying capacitor? Is there a reason behind it? Yes or no? Can you tell me that? No, sir, it's just a fault. Okay, by default. Okay, by your intuition, you said it. Okay, no issues. So my question is much more related, that why inductive sensor is more reliable rather than capacitive sensor. Due to high switching frequency. Very correct. Very correct. Very correct. Very good, man. A very technical answer associated to it is that due to high switching frequency. Now I want you to switch over to PPT, the presentation, where we can look at the working of capacitive sensor. So it is just a plate, okay? It is just a plate, okay, which provides a current, okay? And whenever there is an obstruction or something else, through capacitance, the capacitance is going to change accordingly, okay? And that change in capacitance is going to detect it, okay? But that is associated to a particular distance, and the fluctuation in this particular type of sensor is much more than others.
whereas you can see in inductive type there is your Schmidt trigger and amplifiers that are associated or built in within this particular sensor. Okay, and this is because of the obstruction, and there are comparators that compare with the standard circuit to a secondary circuit, and that difference is calculated, so they work generally for a larger span of time. Okay, okay, understood. And again, a more technical answer is that due to high switching frequency of, then complete the statement, high switching frequency of, हाँ वो किसकी ज्यादा हो सकती है, इंडक्टिव की। वो सिग्नल को स्विच कर सकता है क्योंकि उसमें कंपैरेटिव कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू डेवलप होकर के डिफरेंस बता रहा है, जबकि कैपेसिटेंस में प्लेट मूव होगी और वो एक चार्ज को चेंज कर रही होगी जिसमें फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगा। इसलिए हम हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं इंडक्टिव में, कैपेसिटिव में यूज नहीं कर सकते उस चीज को। नयन, एम आई करेक्ट? नयन, है ना, हम हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। बाकी किसी को डाउट है इसमें फिर से पूछ लो, कोई इशू नहीं है। एम आई करेक्ट, यस और नो क्लास प्लीज? यस और नो क्लास, एम आई करेक्ट? ओके, 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 आर यू अलाइन्ड? यस, यस, यस। तो मतलब आपको समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, इवन आई थिंक मैं आपके कुछ आईईएस के पेपर भी देख रहा था, ईसी ब्रांच के, उसमें मटेरियल रिलेटेड होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा कि विच वन इज मोर रिलायबल और विच वन इज मोर रिलेटेड, उसमें ये सारे थे और इंडक्टिव भी था। अब ईयर तो याद नहीं आ रहा मुझे, शायद आईएएस का था या किसी और पेपर का था आपका, बट ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अब यही क्वेश्चन अगर आप जनरली देखोगे तो कहोगे क्या क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल है, कोई इसका मतलब ही नहीं है, कोई नॉलेज का वो नहीं है, बट दिस इज रिलेटेबल, दिस इज हाईली रिलेटेबल टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है आपका कि क्या आपको यूज करना है। ओके, and my next question to you is that whether the optical sensors are disturbed by the environment or not. ऑप्टिकल सेंसर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते? यस, ऑप्टिकल सेंसर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जी, जी, ओके। अगर लॉन्ग रेंज चाहिए, अच्छा, इंडक्टिव सेंसर लॉन्ग रेंज सोल्यूशन दे सकता है या फिर ऑप्टिकल सेंसर लॉन्ग रेंज सोल्यूशन दे सकता है? ऑप्टिकल दे सकता है, मतलब ओके। अच्छा, ऑप्टिकल सेंसर स्पेसिफिक लोकेशन बताता है या केवल पासेज बता देता है कि उसके आसपास से कोई चीज गई है? वो प्रॉक्सिमिटी को स्पेसिफिक बता सकता है या फिर पैसेज? नॉन स्पेसिफिक। यस, 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 नॉन स्पेसिफिक। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड बानू, very good Aparajita, very good Ritik. Yes, you all are correct. Very good Varun. Yes, yes, yes. Optical sensor is not specific. Optical sensor is not specific. Okay, okay, very correct. Very correct. Okay, 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 okay. My next question is
inductive sensor is for metallic? That is a very basic question. Can metallic can be used for capacitive sensor? Yes or no? I have a very tweaked question to you. I was not asking that whether inductive is used for metallic or non-metallic. I am asking that whether capacitive sensor can be used for metallic material or not. Whether it can be used or not. Recommended? nahi. It is not that whether it is recommended or not. Can we use a capacitive sensor for a metallic part or not? For the passage of metallic part? Yeah. Yes, we can use it. We can use it for a metallic part, but it is not recommended. When it is a metallic part, you will use a inductive sensor. Okay, so just tell me a very vague range. Every sensor has a uh, very specific range, and it is as per the model number, as per the power range, as per the position, whether it is vertical or horizontal, the range changes. But a very bigger domain of dimensions, if I am talking about, can you tell me the range of inductive sensor and normal industrial inductive sensor? 0.8 to 100 mm. Yes, yes, yes. Very specific answer. Very good, man. Is Nan correct or not? Class, is Nan correct or not? Okay, okay. Thank you, Nan. You are very correct. Yes, it is the specific range. And what can be the range for optical sensors? Class, what is the range of optical sensor? Google it yourself and answer it to me. I don't want to answer it because once you Google it, you can remember it for a long time. What is an average range for a optical sensor? There might be different answers also. Be aware of that. Class, kindly Google it and answer it. And I am doing this exercise just to uh, infuse these concepts into your mind. Because if you are going to Google the range and you are going to look into it, then 3 to 60 mm. Other answers also. Okay, okay. Khushbu and Nayan, my question to you is that we all have agreed to, I think, Nayan, right? That the range of optical sensor was.
and your range is equal to that, and earlier statements were that हाँ सॉरी इंडक्टिव की, सॉरी पहले इंडक्टिव की, सॉरी मैं मेरा स्टेटमेंट वही था, मुंह से ऑप्टिकल निकल गया कि इंडक्टिव सेंसर की आपने जो रेंज बताई थी उस रेंज से भी शॉर्ट फॉल हो रही है ऑप्टिकल सेंसर के लिए, ठीक है। बट इन जनरल आप ये देखिए, जो आप रेंजेस देख रहे हो ना, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेंज जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए भी हो सकती है, बट आप इन जनरल अगर आप 3 to 60 देख रहे हो तो वो 3 to 60 या 3 to 100 या 1000 इंडक्टिव सेंसर की नॉर्मली जनरल एक लेवल पे अगर आप देखो तो 50 से लेके 100 mm के अंदर ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बाहर जा रहा है इंडक्टिव सेंसर काम भी नहीं करेगा, भले ही कितना भी आप उसको, क्यों क्यों हम इससे ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि जितना ज्यादा हमको वो कैपेबिलिटी चाहिए, द मोर वी नीड अ कैपेबिलिटी, the more kind of power is required. Okay, and now we know that an external power is required for a sensor to operate. We all know that, all right, whether it is in capacitive or whether it is an inductive, an external source of power, external source of energy is required for sensor also. Okay, so a very high kind of power will be required for a higher distance of an inductive sensor. That is the reason that for a larger distance, and when there is only a specific distance, or you can say that it is a non-specific distance but the distance is large, then we use optical sensor. So now you can understand that yes, when there is a conveyor line, okay, now please understand, when there is a conveyor line, that line will be having a larger distance than 100 mm. Okay, for a big industry that distance will be a very large distance. Okay, so what kind of sensors for proximity you are going to see more in industries, whether it will be inductive, capacitive, or you can say photoelectric sensors or optical sensor? Just answer me this question. My main motive was to get answer of this question from your side. Class, my question is, what kind of sensors will be you will be seeing more, number of sensors will be more in a particular industry, whether it will be optical sensor, whether it will be yeah, optical means photoelectric sensors, optical. Optical sensor, yeah, correct. So now you have been reached to this particular answer. Now we can take a break, and we will meet at after it is 3:40, right? And 3:35. So yeah, we can continue after say 3:50. Can we meet at 3:55? 3:55. Can we meet at 3:55? We can take a break right now. Okay. Okay. So we are going to meet at 3:55 p.m.